from NCERT? First of all, tell me this. I don't really think so. I think he gave the questions like by himself. I don't know exactly. No. I just want to ask. What I want to ask is, Safa, that after the class, were you able to solve the questions? I mean, do you have any doubts? Or if there is something you did not understand, you can ask me, right? So, I just wanted to tell you, convey the message that if there is some problem, if there is some issue, to I mean, from the part which you have already studied, you can ask me if there is any doubt. yeah, okay, sir. Yes. And basically, I also want to tell you guys that whether you have covered these three forms or not, just tell me this. I mean, all the algebraic functions. For algebraic functions, you must have used one or two formula, but this was the important formula. X to the power n minus a to the power n divided by x minus a, limit x tends to a. Yes, sir. Okay. And trigonometric functions. There are various other formulae as well, but these two are most important. So you should be able to solve all the problems related to algebraic function and trigonometric functions. There were two formulae in trigonometric function. Limit x tends to 0, sin x by x is equals to 1, and then limit x tends to 0, tan x by x is also equals to 1. So we did only sin x by x is equal to 1. And that is also okay. This works in the same way. Whether, I mean, however this worked, they both work in the same way. So can you tell me this answer? Limit x tends to 4. We'll start with some basic questions. Just tell me the answers. Maybe these are the questions which you already solved in the class. Sin 4x divided by sin 3x. The first question is this. Sir, 4 by 3. Oh, correct. 3 by 4. No, 4 by 3. Right. If you are facing problem with these questions, just raise your hand. I'll get back to you. Is it 4 by 3 or 3 by 4? 3 by 4, far, not 4 by 3. Sorry. It should be 4 by 3. You're correct. So you have to divide this sin 4x by 4x and also multiply this with 4x. So what you can do is, and then we can apply the same thing. So this part will be 1. This is also 1. X got cancelled out. The answer should be 4 by 3. Yes. Please tell me this as well. Limit x tends to 0. 1 minus cos 2x divided by 1 minus cos 4x. Before this, just tell me this. 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 4x. Maz, what's the first step that we do in a question of limits? Sir, we check if it's 0 by 0 form first. Yes, correct. So is it a 0 by 0 form? No. What's the answer then? 1 by 1. 1 by 1. Why 1 by 1? If you put x 0, you get 1 minus cos 0 upon 1 plus cos 0, right? What's the value of cos 0? 90 degrees. No. 90 degrees. Arey, wow. Maz. Oh, wait. What's the value of cos 0? Cos 0 is 1. Cos 0 is 1. Correct. So 1 minus 1 divided by 1 plus 1. So it is 0 by 2, which is 0.
So if I ask you this question, the answer is 0 directly. Because you don't need to apply any formula. This is not an indeterminate form. But what I have asked you is not this. I wanted to know this 1 minus cos 2x upon 1 minus cos 4x, which is certainly not 0. This is an indeterminate form. If you put 0, you get 0 by 0. Now, how to solve this? So divide by x, Okay, multiply divide by. okay, and then do we have any formula to solve this? Sine by tan equals to cos. Sine by tan is equals to cos is correct. Yes. But how to solve in that case? So we can write cos 2x as sine 2x divided by tan 2x, which is correct. In that case, the question would be lengthy mass. The only problem is this: we have to apply many x's to get this, to get the final answer. Do you have any formula related to cos 2x, or can you somehow use any formula on 1 minus cos 2x? We have written this formula like at least 7 to 8 Sine times. square x. 2 sine square x, correct. And what can we use in place of 1 minus cos 4x? 2 sine square 2x. Correct. So this is 2 sine square x, and this is 2 sine square 2x. Right? You can remove this. As you solved this part, sine 4x upon sine 3x, you can easily solve that part too. Right? Now how? Then like sine x by x the whole square divided Oh. by. Correct. So this sine square x, we need what? X square in denominator, right? So, Yeah. Yeah. and for sine square 2x? Into square by sine square 2. Sorry, I did not get you. Sine square 2x, what should we do? Sir, 1 minute, sir. Yeah, I yeah, wrote it's it as okay. sine x by x the whole square divided by Correct. sine 2x by 2x the whole square. Correct. So in that case, here it should be 2x whole square, right? Yeah. So we can multiply and divide the denominator by 2x whole square. Now, this part is 1. This part is also 1. Now we have x square by 2x whole square, which is 4x square. And limit x tends to 0. The final answer should be 1 by 4. So there will be some questions related to this part also. when you have to apply these trigonometry uniform. This was all about limits, and I think we were clear with the LHL and RHL part already. So if you have any problem, any doubt related to limits, you can ask me. You can start with, I mean, if you don't have any doubt, then you can start with derivatives part.
Okay, in that case, we should start with derivatives. The chapter was limits and derivatives. We will use limits in the next year and derivatives as well. But you have already solved differentiation, first of all. You know the basic formula for differentiation in physics. You must have learned that. But right now, we will not talk about the formula. We will talk about how did this formula come from. Right? That will be the interesting part. Obviously, तुम्हें सबको या तो सीधा सीधा formula करना ही है. That is important. But for this class, for 11th, you'll be more interested on how did we get that formula. That is what you have to do. Yes, yes, ask. So wasn't there a formula on cos x also? 1 minus cos x or something? Yes, that we have, but that is not much use. I mean, that is a very basic formula. We have that formula, right? So can you show a question with limit when x approaches 0 and tan x by x is equal to 1? Yes. Basic question. I mean, all of the questions which we have solved on sine can also be repeated on tan. So basically, if you have tan 4x by tan 3x, when limit x tends to 0, you do the same as you did in sine x. So the pattern of the questions are same, exactly same so far as in sine x. The pattern of the questions for tan x is exactly same as it was for sine x. Okay. Yeah. So you can, whatever questions you've solved for sine x, you can solve all of them using tan x as well. In place of sine, just change tan. Okay, so Okay. so the answer would be 4 by 3 for this one, right? Tan 4x by tan 3x. Yes, 4 by 3. Same concept and same formula. Acha, guys, I gave you 1 or 2 questions in the last class, I guess. Have you solved these 31 and 32 from the exercise? Please come on page number 303. I want to discuss these 2 questions. 31. Maz, this is the basic, this is the extension of this formula only. For this, you can, whatever you have written is the extension of that part. So let's say if this is sine nx by x, you can always multiply and divide this by n so that this turns into a formula. Obviously, this has to be multiplied by n as well. So this will turn out into a formula and you will get the answer as well. So this is nothing but this extension. Yeah, guys, have you solved this question by 31 and 32? So 31, first of all, how many of you have solved 31 question? Page number 303, question number 31. You can just raise your hand. If not, please do the honor, solve it. Or I think in the previous round, so they had actually done this question. You have, I don't think, Acha, you have done this question in the class? Yeah. Not in my class. Not in your class. Okay. So what should be the answer? Just tell me the answer. But I don't think so. The answer is correct. Why? The answer must be correct. Like, he was like, I don't know, sir, because in a meeting had ended abruptly, so I don't know. But it was like we had reached when limit x approaches 1 and f of x is equal to 2. Yes, that is correct. The answer is correct. Limit x tends to 1, fx But must be 2. I didn't understand one part of this. Okay. That sir had mentioned that the denominator will approach 0, then
the numerator should also like approach 0. Therefore, Numerator must approach. yeah, Yeah. numerator. Then f of x minus 2 will be equal to 0. Like I didn't Yes. quite understand this, sir. So that is the solution basically, Safa. What we are saying is that let's say we have been given this question. एराम तेरे को समझ आया ये क्वेश्चन? मेरे को बता. No, sir. ओके. मास को समझ आया ये क्वेश्चन? माज, अब्दुल्ला, थरीफ, फहद, किसी को भी समझ आया तो मेरे को जस्ट बता सकते हो. फहद आई थिंक बता मेरे को, ये सॉल्व कर सकता है. नहीं समझ आया. नहीं समझ आया ये बोल रहे. नहीं समझ आ गया. हाँ तो बता ना क्या आंसर है, मतलब कैसे. So first limit x tends to 1 fx minus 2 upon limit x tends to 1 x square minus 1 equals to 5. ठीक है. Then cross multiply कर देंगे. अच्छा ठीक है. अच्छा ऐसे. ओके ओके ओके. हाँ ठीक है, मतलब वो बात भी. बट फादर में से लिमिट्स को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. अगर हम टेक्निकलिटीज पे जाए ना तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx minus 2 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x square minus 1. ये हम तभी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट. ऐसा नहीं है कि हम लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी. तो जब प्लस और माइनस की बात आती है तब तो हम डायरेक्टली लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट जब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की बात आती है तब हम डायरेक्टली लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. मतलब लिखवाया ऐसे ही गया होगा, आई नो दैट. मतलब सभी लोग ऐसे ही लिखवाएंगे क्योंकि फॉर्मूला यही है, ऐसे ही, मतलब दैट इज हाउ इट इज डिजाइन. बट जस्ट लर्न अ सिंपल कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए व्हाइल इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, क्वेश्चंस ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, when you distribute limits, just make sure that both of your parts, right, both of your parts are of same nature. Same nature से मतलब ये है, जैसे कि let's say ये दिया हुआ तो sin x by x एंड tan x by x, अभी मेरे को ये पूरा लिमिट पे दिया हुआ है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके 1 लिख देता हूँ आंसर, विच इज करेक्ट, राइट. बट मैं डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर पाया, अंडरस्टैंड दिस, मैं डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर पाया ना क्योंकि ये वाला फंक्शन भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है. ओके, अगर दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म थे तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट हमेशा नहीं होगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट. अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है और दूसरे वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, या लेट्स से कुछ इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तब उस केस में मैं इसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा. ऐसा नहीं कर सकता कि ये कुछ आंसर दे रहा हो और ये इन्फिनिटी दे रहा हो तब मैं लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूं. तो लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक ये चीज का ध्यान रखना है कि दोनों फंक्शन सेम नेचर के होने चाहिए, यानी कि आप लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने तभी जाओ, आपके लिए तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि तभी लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ जब दोनों 0/0 फॉर्म का बन रहा हो. अगर ऐसा है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म दूसरा भी इंडिटरमिनेट फॉर्म, तब आप सीधा लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो और आंसर निकालो, राइट. बट यहां पे हमने क्या किया एग्जैक्टली इसको तुम्हें थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा. मतलब वही चीज, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा. तो लेट्स से आपने x = 1 रखा, लिमिट x टेंड्स टू 1. सबसे पहला काम तो यार हम गाइस यही करते हैं ना कि हम पुट करेंगे वैल्यू, विल पुट दैट वैल्यू इनटू द फंक्शन एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, राइट. So as soon as I put x = 1, I get f1 minus 2 divided by 1 minus 1, right. So let's forget about the right hand side wala part for now. So the left hand side will be something like this, and in that case if f1 minus 2 divided by 1 minus 1, this becomes 0, right. So let's say this has some answer, we don't know what's the value of f1. Okay, अभी f1 नहीं पता है तो ऑब्वियसली f1 minus 2 भी नहीं पता है, तो मेरे को इसका आंसर नहीं पता है. ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि न्यूमरेटर वाला पार्ट, चलो लेट्स से 4 आ रहा है या कुछ भी -10 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है,
अदर देन 0। इंपॉर्टेंट है, अगर ये वैल्यू कुछ अदर देन 0 है, लेट्स से 4, 5, 10, -10, 100, 1 lakh, कुछ भी, then the answer to the whole part would be infinity. क्योंकि लेट्स से ये आंसर 4 है तो 4/0 बन जाएगा इंफिनिटी, बट आंसर तो यार ऑलरेडी गिवन है ना, आंसर इज पाई। नाउ हाउ कैन वी रीच टू पाई? ओनली व्हेन दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, तब इसका आंसर कुछ ना कुछ आ रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर पाई आ सकता है। बट if this whole expression is not making an indeterminate form, तो यार उस केस में तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जब नहीं बन रहा होगा तो तब कैसे इसका आंसर पाई आएगा? तब तो इसका आंसर इंफिनिटी आएगा इन एवरी केस, क्योंकि ऊपर कुछ आंसर आ रहा होगा और नीचे 0 आ रहा होगा। न्यूमरेटर विल बी समथिंग एंड डिनोमिनेटर विल बी 0, आंसर वुड बी इंफिनिटी। तो इट इज मैंडेटरी, इट इज मस्ट दैट दिस शुड बी 0। इफ दिस इज 0, देन 0/0 का फॉर्म जो बनेगा, 0/0 का जो भी फॉर्म बनेगा, उसका आंसर कुछ तरीके से सॉल्व करके पाई आ सकता है। We have different methods and all of this, right? यहां से हमें पता चलता है कि न्यूमरेटर हमारे पास 0 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है, आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो फिर आंसर इंफिनिटी, वो तो हम क्लियरली देख ही सकते हैं। तो इसलिए दिस मस्ट बी has to be 0. This numerator has to be 0. अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो, अब 2 पे लिमिट अप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, तो हम लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x पे ये डिपेंडेंट ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है x से यार। In that case, we'll get this first part as limit x tends to 1 fx, which we were trying to find out, and this will be 2 minus 2. If we shift that to right hand side, that will be 2, and hence the answer is limit x tends to 1 fx as 2. So all of you, whoever did not understand the question in the last class, did you understand it now? Iram, Safa. Yeah, sir, I understood. Okay. And what about Iram, Tharif, Maz, Abdullah? पूछ लो यार, कोई भी प्रॉब्लम है तो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, मतलब बस यही है कि न्यूमरेटर भी 0 होगा। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है तो उस केस में आंसर फिर इंफिनिटी है ना, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो 0 हो ही रहा है। अगर आप x को 1 रखते हो तो नीचे वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब आंसर इंफिनिटी बन जाएगा। अगर ये भी 0 नहीं है, अगर ये 0 है तो 0/0 का फॉर्म है, फिर सॉल्व करेंगे। जो भी जैसे भी आए आंसर पाई, मुझे इस बात पे मेरा कोई फोकस नहीं है ना, हमें रखना है, क्योंकि दैट इज नॉट आवर मतलब पॉइंट। वो लॉजिक ही नहीं है कि हमें निकालना ही नहीं है ये चीज के आया कैसे। हमें ये निकालना है कि fx जब x टेंड्स टू 1 हो रहा होगा तो क्या आंसर देगा। तो उस केस में fx को आंसर देना चाहिए 2, so that this becomes an indeterminate form. 2 minus 2 0 हो जाएगा, नीचे भी 0, ऊपर भी 0। ओके, 32 एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हैव यू सॉल्व 32 इन द क्लास? No, sir. नो। ओके, तो ठीक है, अभी करते हैं फिर। चलो, अच्छा क्वेश्चन है काफी। वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दीज ओनली इन द 12th क्लास। लिमिट्स का आपका यूज जो होगा वो यही है। यू विल बी रिपीटिंग दीज फॉर्मूले अगेन, all the formulae of limits. You have to remember these formulae. I mean, either remember them or you will be notified before the class. So there is a chapter called continuity, in which you will be told what's the use of limits in maths, in calculus. How do we use them? Right now, we are only teaching you how to solve limits. Then we will teach you what's the application of limits, right? And while solving application, you will have to solve these kind of questions also. 32.
So this is a question which is related to your next class, but if you can solve it, you will be able to grasp limits. Like what's the basic concept and what is the application of limits? It's all 32, okay? You have 2 minutes. And G, what's the value of M and N? So will this question be like when limit approaches x, when x approaches 0 minus and x approaches 0 plus, Yes, will it be subdivided? yes. Okay, 1 minute. There will be 2 parts we need to solve. So we know that limit x tends to 0, fx exists, and limit x tends to 1, fx exists. Now, if they exist, what does that mean? Safa, can you tell me that? Like, can I say that LHL will be equal to R? No, I just want to ask that what do you understand when someone says that this limit exists? That there can be how do I frame it? It's not like indeterminate form. You can find a Yes, value. you can of- find out the limit on that Yeah, part, the right? limit. Yeah. Yes. And how do we find out that limit? We either we have some formula, right? I mean, Yeah. there's a concept using formula, how to solve limits using formula, and then there is a concept how to solve limits using LHL and RHL formula. RHL. Yes. So whenever we say that this limit exists, it basically means that the RHL and LHL at this point is same. Right? Now, if we want to find out this, limit x tends to 0 fx, we need to find out what is the value of limit x tends to 0 negative fx and what is the value of limit x tends to 0 positive fx. Basically, this means that these are equal.
right? If the limit exists, then LHL is equals to RHL. So for this part, first part, we can do this. Now limit x tends to 0 माने 0 minus h. And this means that limit h tends to 0, f of 0 plus h. Am I correct, guys? I mean, did you understand how are we proceeding? Yes. Iram, hello. Class में है? Yes. Okay. समझ आ रहा है तेरे को ये सब क्या चल रहा है? बोल दे, बता दे, मतलब नहीं भी आ रहा तो भी बता सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझ आना चाहिए, मतलब बेसिकली नहीं आ रहा एक बार तो मैं समझा दूंगा दोबारा. So just feel free to ask, okay? अभी मेरे को ये बता, अच्छा चल तेरे को समझ आई अगर ये बात, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 0 minus h को मैं क्या लिखूं? What is f 0 minus h? अब देख fx के लिए तीन फंक्शन यूज हो सकते हैं, या तो ये या तो ये या तो ये, डिपेंडिंग अपॉन आप किस x की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो fx को. तेरे को कैलकुलेट करना है 0 माइनस h के लिए. 0 माइनस h मतलब कौन सी कैटेगरी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? फर्स्ट, क्योंकि 0 माइनस h मतलब 0 से भी थोड़ा सा छोटा, तो 0 से थोड़ा छोटा यानी कि फर्स्ट फंक्शन x लेस देन 0 के लिए, तो आपको इस फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h पुट कर देना है बस. और x की जगह 0 माइनस h पुट करेंगे तो m टाइम्स 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस m. अब 0 माइनस h बार बार नहीं लिखूंगा मैं, सॉरी, मैंने ज्यादा समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज आपको पता है 0 माइनस h मतलब माइनस h ही, राइट? और एरम दूसरे वाले पार्ट के लिए हम क्या कर रहे होंगे? दूसरे वाले पार्ट पे भी मेरे को फंक्शन की पूरी वैल्यू बता दे, जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे लिख के बता, क्या बता? सोच ले फिर बता मुझे. तो पहले फिगर आउट कर कौन सा फंक्शन यूज होगा. सेकंड फंक्शन. करेक्ट, ठीक है. n हाँ, माइनस h y प्लस माइनस h. देख इस बार क्या पुट कर रही है तो पहले ध्यान से देख, 0 प्लस h. 0 plus h is h only. oh h, yeah. Yeah. So h प्लस प्लस है. करेक्ट, एकदम करेक्ट बात है. चलो ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व किया तो h को 0 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये खत्म ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n बन जाएगा. और इधर h को 0 रखूंगा तो m बन जाएगा. तो ये कह रहा है n की वैल्यू m के बराबर होनी चाहिए. पहला कंडीशन तो ये आ गया, बट ये आया सिर्फ 0 वाले पार्ट के लिए. अभी उसने में दूसरा पार्ट भी दिया है ना, तो अगर उसको मैं देखता हूं तो इससे मुझे ये पता चलता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी कि 1 का LHL और 1 का RHL भी इक्वल. माज रुक जा. थरीफ एंड अब्दुल्ला दोनों को एक एक पार्ट बताना है. थरीफ से स्टार्ट करते हैं. चल बता, स्टार्ट कर. ये लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखूं? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव का क्या मतलब है, पहले मेरे को ये बता.
Sir, extends to One negative. one negative. Yes. One negative. It means the value of x is what? -1. -1. अब्दुल्ला, दोनों माइक ऑन कर लो, अब्दुल्ला एंड थरीफ. Abdullah, what's the value of x in this case? 1 से 1 क्यों? 1 नेगेटिव लिखा हुआ है, तो 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है ये बता. 1 नेगेटिव का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा छोटा 1 से. जैसे देख, हमने यहाँ पे 0 नेगेटिव को नहीं लिखा, 0 -h, और 0 पॉजिटिव को लिखा 0 +h. तो बता क्या होना चाहिए अब x टेंड्स टू 1 नेगेटिव को क्या लिखेंगे? 1 - h. 1 -h, करेक्ट. और ये क्या होगा? x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 + h, एकदम बिल्कुल ऐसे ही समझना है ये दोनों बातें. 1 कभी भी नेगेटिव लगाया तो मैंने थोड़ा सा घटा दो, पॉजिटिव लगाया ऊपर तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दो. और थोड़ा सा घटाना, थोड़ा सा बढ़ाना, सीधा सीधा मतलब है h कर दो. 1 थोड़ा सा घटाना है तो -h, बढ़ाना है तो +h. अब्दुल्ला, ये बात समझ आई? हाँ सर. ठीक है. अभी मुझे ये बता कि इस वाले पार्ट के लिए मैं fx कौन सा यूज करूं. यहाँ पे तू x की वैल्यू क्या ले रहा है? 1 - h, यानी कि 1 से छोटी या 1 से बड़ी? 1 से छोटी. 1 से छोटी. 1 से छोटी तो कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए इन 3 फंक्शन में से? ये देख, ये कहां, कौन सा? थर्ड. थर्ड में देख x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना, तब तुझे थर्ड यूज करना चाहिए. तो क्या ये थर्ड इस वाले पार्ट के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है? सेकंड फंक्शन. यस. अब मेरे को सेकंड फंक्शन लिख के दिखा. चल, लिमिट. तो देख, पहले ये बात समझ ले, जब भी हम x टेंड्स टू 1 नेगेटिव करेंगे तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 1 - h है. तो अगले ही स्टेप में मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दूंगा और x की जगह 1 - h रख दूंगा, है ना? हाँ सर. ठीक है. अभी तो पहले मुझे fx तुझे पता है क्या यूज कर रहे हैं, इसमें x की जगह तुझे क्या रखना है तुझे पता है. अभी मेरे को ये कंप्लीट कर फंक्शन. फंक्शन तेरे को पता है सेकंड वाला है, बस वहां पे x यूज हो रहा है. अब तू x नहीं यूज कर सकता, x की जगह तुझे पता है क्या यूज कर रहा है. 1 बिल्कुल. तो अभी ये कंप्लीट करना सेकंड पार्ट, मतलब ये पार्ट. n इंटू x की जगह क्या आ जाएगा? 1 - h + m. 1 - h + m. करेक्ट. चल, अब राइट हैंड साइड वाला करके देख. पहले तो ये फाइंड आउट करके कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए. 1 + h. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. करेक्ट. अब इस फंक्शन बता मैं कैसे लिखूं. n. n 1 + 1 cube + m. 1 + h का होल क्यूब प्लस m. करेक्ट. गुड. ठीक है. अभी माइक ऑफ कर सकते हैं. ठीक है यार, देखो जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं. बस दो बातों का ही ध्यान रखना, यही कि 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव को कैसे अप्लाई करते हैं. एक तो इसमें हमें फंसाएंगे बार बार यहाँ पे कि दे विल गिव यू मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ फंक्शन, है ना, फॉर डिफरेंट x. सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट व्हाट x is given, for what x we are calculating the function, right? And after that just put that value. तो h tends to 0 n times 1 - h plus m इस वाले पार्ट के लिए बना, क्योंकि यहाँ पे we have to find out the function for x tends to 1 negative. X tends to 1 negative means that x is just smaller than 1, but it is smaller than 1. If it is smaller than 1, then we have to use this. And for second part, x tends to 1 positive means that x is just greater than 1. For this, we need to use this function, third function. Now we can directly put h0. If we put h0, we get n plus m. h0, this is 1, n into 1 is n. So this is n plus m. And if you put h0 here, if you put h0 here, so you'll get
1 cube, which is again 1. So n plus m again. Now from both the equations, you cannot find out the value of n, because n plus m is either way equal to n plus m. This is a very generic expression. This is a general expression. N plus m is equal to n plus m. It will always be true for any value of n and m. And you can only say that n and m both are equal and they can take any value. So as you haven't find out any specific value, so from first and second, n is equals to m and n comma m belongs to real number. Belongs to, you can only say just 1. So n and m both are equal. The important observation is this, and they can take any real value. So the complete answer can be written as values of n and m are equal. The values of n and m are equal. I'm writing this here. Values of n and m are equal and can be any real number. Tharif, बात समझ आइए? Yes, sir. Cool. No, just a minute, guys. Yes, guys. So can we proceed, or do you have any problem in limits? If you have any doubt, then ask me. Guys, you don't ask me doubts. मेरे को लगता है मेरी ये फेवरेट लाइन हो जाते रह जाएगी कि if you have doubts तो ask me. मैं पूछता ही रहता हूँ तुमसे बार बार ये बात, but the point is the reason why I'm doing this again and again and again and again continuously in every class I tell you this. I mean I ask you guys about doubts is because you know maths ऐसे ही होगा. Maths में you will have doubts. If you don't have doubts, it will only mean that you haven't solved the proper number of questions, because you will have doubts. So whenever you have doubts, just ask me.
Also, abhi to you guys have like so many resources, online resources and everything, Google. So you can also take that help. But sometimes in some questions, the concepts will be used and you will not get the what is the concept. So whenever you have any problem with that part also, just ask me. Okay. I just want you guys to learn. और कोई पर्पस नहीं है इसका, तुम्हें परेशान करना बिल्कुल पर्पस नहीं है इसका. अभी मैथ्स है सिलेबस में तो क्या कर सकते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही. और पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, मतलब बेसिक माने कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से निकल गए बस काम करके, क्योंकि वो फिर भूल जाएंगे अभी. you'll get admitted in the courses of economics and maths and फिर उसके बाद मैथ्स आ जाएगा भाई, सिर्फ यही नहीं है मैथ्स. अभी आगे तुम जाओगे तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे कि like there are a lot of courses in which this will happen. This is bound to happen that somewhere or other you'll get the formula for maths. It can either be calculus or be trigonometry. These two are the very important and you'll face them. और तभी तुम्हें मेरी शायद कभी याद है कि यार वो पढ़ते थे 11th में और बार बार वहां पे डाउट्स और ये सब चलता रहता था. वहां पे जाके तुम्हें ना ये चीज याद आएगी. अगर तुम सही से अभी पढ़ोगे तो तुम्हें उस टाइम तक, मैं ये नहीं करूँगा तुम्हें याद रहेगी, एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा गाइस, मेरे को, मैं अभी बता देता हूँ, कुछ भी याद नहीं रहेगा. बट जब तुम दोबारा पढ़ोगे ना इस चीज को, तो गेट दिस क्विकली एज कम्पेयर टू अगर तुम उस टाइम फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो, और काफी टाइम लगेगा. तो बस इतना ही है कि अभी अगर तुम थोड़ा सही से समझते हुए चलते हो तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज आपके लिए कोर्सेज में आगे मैथ्स यूज होगा ही होगा. तो मैथ्स आ ही जाता है भाई, मैथ्स का यही सिंपल सा फंडा है बहुत. और मैं अभी बता भी रहा हूँ कि मेरे से 4 years बैक आई वाज टीचिंग सम बैच फॉर this KVPY and some other entrance exams as well. There's a college in India, if you know about it, JMU. So JMI, sorry, Jamia Millia Islamia. तो वहाँ पे 11th में भी एडमिशन होता है एक्चुअली फॉर डिफरेंट, मतलब these branches, commerce and science and this arts. तो 10th से 11th में भी एंट्रेंस होता है, 9th में भी एंट्रेंस होता है, राइट. तो मैं समटाइम्स बैक आई वाज टीचिंग फॉर दिस 11th एंट्रेंस, देन आई वाज टीचिंग फुल टाइम. अभी तो मैं बहुत ही मतलब लिमिटेड ही टाइम दे पाता हूँ, बट तब तो आई वाज टीचिंग फुल टाइम एंड वी वर प्रिपेयरिंग दीज गाइज फॉर JMI एंट्रेंस 11th एंड दे वर फ्रॉम कॉमर्स. तो कॉमर्स में भी थोड़ा मैथ्स आता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट बेसिक मैथ्स वो पूछते हैं 10th क्लास का. सो एंड वही सेम स्टोरी के तुम ही जैसे कर रहे हो, तुम भी ऐसे ही करते हो. एंड आई हैव आल्सो डन इट. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ओनली डूइंग इट, एवरीबॉडी डज इट, राइट. के नहीं पढ़ते हैं उतना ध्यान से, कभी नई फॉर्मूला, कोई चैप्टर नहीं समझ आया तो छोड़ ही दिया, बिल्कुल नई फॉर्मूले जमे तो ठीक है छोड़ दिया एकदम. तो वैसे वाला सीन. तो अभी मेरे पास 4 days back I got this call from 2 students from that batch. They both are in Jamia right now and they've attended this economics course, है ना. और वो दोनों मुझसे बोल रही हैं कि अभी हम वो क्लास में तो कुछ नहीं पढ़े थे, बट अभी तो ये सारा वापस आ गया है इकोनॉमिक्स में. तो अभी मैंने नोट्स उठा के देखे तो मेरे को जो है नहीं बना समझ आया कि वो क्या चल रहा है. तो अगर आप क्लास लगा दो वो एक कि हम पूरा मैथ्स 11th 12th वाला कवर कर ले, तो अब वो तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल समहाउ डू दैट. बट मैं बस तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो ऐसा होगा समटाइम्स. जब आप होंगे, मतलब एट सम पॉइंट जब आप होंगे अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो आपको ये चीज वापस याद आएगी कि मैथ्स काम की चीज तो है. तो इसलिए बस मैं पूछता रहता हूँ यार डाउट्स तुमसे कि बार बार. तो तुम जब भी डाउट्स हुआ करें मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल ये नहीं सोचने का है कि हमने ये टॉपिक खत्म हो गया है या कुछ भी, है ना. बहुत ही फ्री रहना है इस क्लास में, चिल करो, पढ़ते हुए चिल करो, बस मैं ये चाहता हूँ. पढ़ते रहो और थोड़ा थोड़ा काम देता हूँ मैं, वो कर दिया करो बस, राइट. चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स नाउ. और वन मोर थिंग, अगर कभी भी और भी डाउट्स हुआ करे मन में तुम्हारे कि हमें क्या कोर्स करना है, क्या लेना है, क्या बात आगे करना है, तो वो भी तुम मुझसे शेयर कर सकते हो. मतलब आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हाउ टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर कोर्स, जो भी तुम करने जा रहे हो उसका एंट्रेंस. तो
कभी भी डिस्कस कर सकते हो फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, let's start with derivatives. They both are, I mean, derivatives is a very important part, first of all. Important as well as simple. Because अभी जब तुम क्लास में आते हो, मेरी तो 12th क्लास चल रही होती है और मैं उन्हें इंटीग्रेशन पढ़ा रहा होता हूँ। अभी हमने बहुत बड़ा चैप्टर होता है इंटीग्रेशन 12th में, the longest chapter actually in all of these books from first class to 12th class, the longest chapter will be integration, है ना? And longest के साथ साथ toughest भी, इससे टफ चैप्टर मैथ्स में है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों बिल्कुल एक जैसी है। डेरिवेटिव्स इज डिफरेंशिएशन बेसिकली। तो इंटीग्रेशन टफ होगा, स्पेसिफिकली अगर हम कैलकुलस की बात करते हैं तो, व्हाइल डिफरेंशिएशन इज इजी। तो डिफरेंशिएशन सीखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट साथ साथ आपको मार्क्स भी यही दिला रहा होगा 12th क्लास में मैथ्स में, तो इसलिए इसका तो कोई चॉइस ही नहीं है। इसमें आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, ये इधर भी पढ़ना है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, और आप लोग आज क्लास में बहुत ही बेसिक से ही पढ़ने भी वाले हो। बट बिफोर दैट, कैन यू गाइस टेल मी सम बेसिक डिफरेंशिएशन? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब? थ्री एक्स स्क्वायर। कौन कौन ये जानता है फॉर्मूले? जस्ट रेज योर हैंड। फहद, वन। सफा, Yes, sir. Ma, do you know these formulae of differentiation, basic formulae of differentiation? No, sir, but I don't know what differentiation is, but only in terms of physics. अच्छा, तो you have done this formula na in physics, the differentiation of x cube, no? Not like that, sir. Not like basic formulas we did. Okay. Like So we what's the directly- differentiation of sin x? Tell me this. I don't know, sir. Okay, ठीक है। And इरम, तरीफ, अब्दुल्ला, तीनों में से कोई भी जानता है? माज जानता है, माज ने बोला है। No, sir. अच्छा, थोड़ा थोड़ा, ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला तो तुम याद कर ही लोगे यार, मतलब बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। दीज आर वेरी बेसिक फॉर्मूले, दे आर लाइक एक्सटेंसिव यूज, सो इन एनी केस वी विल लर्न दीस फॉर्मूले। करना भी पड़ेगा, अभी थोड़ा मैं भी करूंगा और थोड़ा कर भी लेंगे। फिजिक्स में भी आपने सॉल्व करा होगा, अगले साल भी फिर से आएगा, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी अगले साल तो, और आई मीन देयर विल बी अ बिगर चैप्टर देन दिस। अभी तो सिर्फ एक एक्सरसाइज, अगले साल 7 एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज होंगी इसी चैप्टर में, डिफरेंशिएशन में, राइट? तो इन एनी केस वी विल हैव टू लर्न इट, बट बिफोर दैट यू हैव लाइक सम स्पेसिफिक सेट ऑफ फॉर्मूला। आपको हर फंक्शन का डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन हम करना सिखाएंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। So for some, you will have like specific formulae for all the trigonometric functions, for some general rules in algebraic function. Then what is the differentiation of logarithm, exponential, और जितने भी बेसिक टाइप ऑफ फंक्शंस है जो हमने लिखे भी थे फंक्शंस वाली क्लास में, उन सब के हम आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाएंगे। सिमिलरली उन सब के इंटीग्रेशन भी करना सिखाएंगे, है ना? तो इंटीग्रेशन की बात तो खैर बाद में ही करते हैं। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन पे वी विल हैव around 15 to 20 or 25 formulae, right? But right now in this class we're not focused on these formulae, we are focused on how did it come from, like how is the differentiation of x cube is 3x square. That is a basic point of conversation in this chapter. First of all, let's understand what differentiation is. You'll understand it in detail in 12th class. There are 3 chapters associated to this unit only, differentiation. One is differentiation, I mean, not 3, 2, but second chapter is much bigger. So we divide it into 2 parts. So there will be, first part is differentiation, and then second part will be applications of differentiation, AOD, we call it AOD, applications of derivatives, right? So you'll understand it in details, okay, और कहाँ पे हम use कर सकते हैं derivatives को, but I'll tell you with the very basic concept, okay? So let's say you have this function y is equals to fx. Consider y is equals to fx.
right? Now differentiation या derivative इस function का, the derivative of above function can be written as, first of all क्या notation है इस पे बात करते हैं. Either it can be written as dy by dx, or it can be written as y1, or it can be written as y dash, or it can be written as f dash x. मैं बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूं. आप चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. y1, y dash, f dash x dash is also the symbol for differentiation, and dy by dx. ये चारों ही टर्म्स कोई भी यूज करी जा सकती है, करी जाएंगी. इनफैक्ट मैं ये भी बता देता हूं, आपको बुक्स में अलग अलग नोटेशन देखने को मिलेगा, राइट? तो डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा जाएगा. नाउ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? सेकंड थिंग इज दिस, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? तो डेरिवेटिव आपको बहुत ही बेसिक सी चीज बताना चाहता है. डेरिवेटिव आपको बताना चाहता है रेट ऑफ चेंज. इनफैक्ट रेट ऑफ चेंज को भी मैं और थोड़ा डिटेल में बता सकता हूं, बट लेट्स अंडरस्टैंड ऑन दिस पार्ट फर्स्ट. रेट ऑफ चेंज आप नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे. पहले ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 5 टॉपिक्स होंगे बेसिकली. तो पहला जो टॉपिक है वो यही है कि डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज. तो रेट ऑफ चेंज क्यों? क्योंकि मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूं. देयर आर मेनी मोर सिग्निफिकेंसेस, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट. मैं बस एक छोटी सी सिग्निफिकेंस आपको बताना चाहता हूं, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज व्हाई I personally think, which is why we invented this differentiation, that we wanted to find out the rate of change, right? Now what does this dy by dx represents? Dy by dx is nothing but, so this can be understood like, this is dy, basically delta y, and this is dx, so basically delta x. Now what is this? This is change in y divided by change in x. This d is derivative, used for derivative. Now derivative is nothing but difference. Derivative delta. So what does derivatives give us? Derivatives gives us the change in one function with respect to change in another function. So for example, if I write dy by dx, it is telling me the change in y with respect to change in x. So for some function y is equals to fx, understand this. I'll tell you in one more terms. Let's understand this through an illustration. So let's say we have this y is equals to 2x. Okay. Now I want to understand how the y is changing with respect to x. Now to understand this, let's put x is equals to 1. If you put x is equals to 1, we get y is equals to 2. Now let's put x is equals to 2. If we put x is equals to 2, we get y is equals to 4. अभी मैं change in y upon change in x निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, if I change x by 1 unit from 1 to 2, y, the change in y is 2 units. Am I correct? Change in y is 2 units in this case, and change in x is 1 unit in this case. x की वैल्यू 1 थी, y का वैल्यू 2 था. जब x को 2 किया तो y हो गया 4. तो यानी कि आपने x को 1 यूनिट चेंज किया, 1 यूनिट से इंक्रीज करा, तो y भी 2 यूनिट इंक्रीज हो गया. Guys, am I correct? You can just show me thumbs up or whatever, you can say yes, no. और अगर इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज वो तो आप कभी भी पूछ ही सकते हो, उस बारे में तो कोई बात ही नहीं. ओके, चलो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 3. तो y का वैल्यू हो जाएगा 6. अभी देखो मैंने x को 1 यूनिट और चेंज किया या 1 यूनिट और इंक्रीज किया, तो y का 2 यूनिट और इंक्रीज हो गया. यानी कि अगर मैं x को 1-1 यूनिट से चेंज करता हूं तो y का 2-2 यूनिट चेंज हो सकता है. आप ऐसे देख लो या आप ऐसे देख लो कि आप x को 1 से x को 3 पे लेके गए, तो y का वैल्यू भी 2 से 6 पे गया.
तो अगर आपने 2 यूनिट x में इंक्रीज करा तो y में 4 यूनिट्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स या dy बाई dx निकालना चाहता हूं इसका, तो वो आना चाहिए 2। वाई? हर यूनिट चेंज ऑफ x पे y gets changed by 2 units. So can I write dy by dx as 2? Is that correct? और वो हम फॉर्मूले से भी सिग्निफाई कर सकते हैं वैसे बहुत इजीली। अगर आप इसमें फॉर्मूले का रूल अगर आप इसमें लगाएंगे, रूल भी अभी हम सिखाएंगे क्या रूल है, कैसे मतलब क्या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं। बट अभी तो हम बहुत ही बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात कर रहे हैं। सिर्फ हम ये समझना चाहते हैं कि भाई ये क्या है, dy by dx क्या बता क्या रहा है, मेरे को ये तो समझाओ थोड़ा, क्या होता है इससे। इससे ये होता है भाई, चेंज इन वन फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन अनदर फंक्शन। आप जितना भी चेंज कर लो, तो अगर आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते भी हो यहाँ पे और कोई भी 2 वैल्यूज उठाते हो, डेल्टा वाई लेट्स से आप फर्स्ट और थर्ड उठा रहे हो, तो डेल्टा वाई हुआ 6 - 2, और अगर आप डेल्टा एक्स उठाते हो तो वो होगा 3 - 1। देखो अब इसका नंबर पहले लिया y में, तो इसी का नंबर x में भी पहले लूंगा। अगर यहाँ पे 6 - 2 लिखा तो यहाँ भी 3 - 1 लिखूंगा, ना कि 1 - 3। राइट? तो इसको देख सकते हो आप, कितना होगा 6 - 2 इज 4, 3 - 1 इज 2, तो आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो dy by dx की वैल्यू 2 ही आ रही है, क्योंकि डेल्टा y by डेल्टा x ही dy by dx होता है फॉर स्मॉल चेंजेस। ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ dy by dx 2। चलो एक बार और करता हूँ मैं यही प्रोसीजर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पूछना है कुछ भी, तो वो तो पूछ ही सकते हो, कभी भी अभी भी पूछ सकते हो। अब की बार मैंने दूसरा फंक्शन लिया y = x²। अगर मैं y = x² के लिए यही काम करता हूं, तो लेट्स से मैंने x को 1 पुट किया तो y को मिला मेरे को 1। अब मैंने x को 2 पुट किया तो y मिला मेरे को 4। तो क्या आप बता सकते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आ रहा है इस बार? बताइए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या आ रहा है? आप चेक कर सकते हो। डेल्टा वाई माने y का डिफरेंस, कितना y चेंज हुआ, और x कितना चेंज हुआ। सर 3 करेक्ट। y में चेंज हुआ 4 - 1 और x में चेंज हुआ 2 - 1, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आया 3। राइट? अच्छा, अब मैं x, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं क्या मास कि dy बाई dx की वैल्यू 3 होनी चाहिए इस बार? सॉरी सर, इसका मतलब कैन आई डिडक्ट दैट dy बाई dx इज 3 फ्रॉम हियर, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था। ओके, चल फिर एक बार और देखते हैं। x को 3 रखा, y मिलता है मेरे को 9। अभी पता चला दोनों में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? सर 5। 5। तो इसका मतलब तो dy बाई dx 5 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के फॉर्मूले से ही हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए, इसका सिग्निफिकेंस यही है, मतलब ये यही बता रहा है। बट फॉर्मूला इसका ये नहीं है, ये नहीं कह रहा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से तुम ऐसे सीधा सीधा निकाल दोगे, क्योंकि देखो ये तो बदल गया। फॉर फर्स्ट 2 केसेस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाज 3, एंड फॉर द लास्ट 2 केसेस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाज 5। इट कैन चेंज फर्दर, एंड इफ यू टेक दीज 2 केसेस, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। 9 - 1 8 डिवाइडेड बाई 3 - 1 2, ये बना 4। इसका मतलब ये है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की बहुत सारी वैल्यूज भी पॉसिबल हो सकती है, हमेशा कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। कांस्टेंट आया तो इसका मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि
अगर आप x को 1 यूनिट बढ़ाओगे तो y हर बार 2 यूनिट बढ़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू कहां से कहां बढ़ा रहे हो। आप x को 1 से 2 करोगे तब भी y 2 बढ़ेगा, आप x को 2 से 3 करोगे तब भी y 2 बढ़ेगा, आप x को 3 से 4 करोगे तब भी y 2 बढ़ेगा। बट इस बार डेल्टा y बाई डेल्टा x कांस्टेंट नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपका आंसर में dy बाई dx का 2x आता है इस केस में, तो ये कांस्टेंट है ही नहीं। वहां पे आप देखते तो कांस्टेंट आ रहा था dy बाई dx। अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू वहां पे 2 आएगा, यहां पे करेंगे तो 2x आएगा। तो इसलिए डेल्टा y बाई डेल्टा x कांस्टेंट नहीं है, यानी कि dy बाई dx कांस्टेंट ही हो हर बार ये भी जरूरी नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट हाँ, यस सफा प्लीज आस्क। If it was y is equal to x cubed, then it would not be constant, right? Yes, not constant. If y is equals to x cube तो dy by dx 3x square होता है उसका भी सफा। Yes, sir. तो 3x square भी खुद में कांस्टेंट नहीं है, यानी कि दे डिपेंड्स ऑन x। इट मींस दैट x का वैल्यू जब आप यहां पे 1 चेंज कर रहे हो तो y में 3 यूनिट्स का चेंज आएगा। बट जैसे जैसे आप x को बड़ा करते जाओगे, आप x को 2 और 3 के लिए देख रहे हो तो y में 5 यूनिट्स का चेंज आएगा। आप किसी और बड़ी वैल्यू के लिए देखोगे x को, y में और बड़ा चेंज हो जाएगा। So that depends on x. It depends on x. It's derivative. तो derivative can be anything. First of all, मतलब can be anything माने कि कुछ constant भी हो सकता है, कुछ change variable भी हो सकता है. But that is how we are trying to make sense of what we will be about to do. कि ये हमें हमेशा इसका काम ही है change in y with respect to change in x बताना। अभी मैं इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें, सिंपल। How is this connected to your real life? Let's understand that. भाई आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में डिफरेंशिएशन की जरूरत है। मतलब मैं तो टेक में तो यार मैथ्स का बहुत ही ज्यादा यूज है, आप ये समझ लो। टेक में, बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मैथ्स का यूज है। तो सफा, पर तुम कुछ पूछना चाहते थे, प्लीज फर्स्ट आस्क योर क्वेश्चन। No, sir. I was just asking about that x square, x cubed. Sorry. ओके, हाँ प्लीज आस्क ना। No, sir. I had asked you when अच्छा, if y is equal to x cubed, then similarly it will not be constant. Like the oh yeah, yes, dy by dx would be changing. yes, this will only be constant for linear functions in fact, Safa. Okay. Y is equals So to if 2xy. y is equal to 5x, like something like this, then हाँ, it, 5x plus 3, 5x plus 100, 5x minus 1000, anything like that. then only it will be constant. Yes, you'll get to know these things अभी जब हम फॉर्मूले कर लेंगे ना, इसका जब पूरा फॉर्मूले पार्ट कवर कर लेंगे तो तब you will be able to get the differentiation directly. अच्छा, आगे मैं आपको एक इसका यूज बताता हूँ डिफरेंशिएशन का, कि क्यों हम चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालना चाहते हैं। इसे ऐसे मत देखो कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसको ऐसे देखो, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेकंड क्वांटिटी, if that one quantity is depending on the second quantity। तो कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे पे इंपैक्ट डालेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट? सो लेट्स से हम कोई एक कंपनी है, बिजनेस कंपनी, और हमारा एक बजट है मार्केटिंग का। दिस इज बिजनेस कंपनी मार्केटिंग, हम लोगों को मार्केटिंग करनी है, राइट? अब मार्केटिंग करने के हमारे पास 3 वेज है। So let's say social media, which is a powerful, by the way, tool for marketing nowadays. And social media के अलावा let's say हमारे पास क्या है, TV ads, another powerful tool. And let's say third is what, some hoardings, right? अबे मेरे पास मार्केटिंग का बजट है 40 करोड़, बड़ी कंपनी है यार, अमीर कंपनी है, इसे समझिए। ये 40 करोड़ बजट मतलब ठीक ठाक बजट है, right? So we have to invest 40 crores in marketing for what? So that our sales can increase, right? सारा मार्केटिंग इसीलिए तो करते हैं क्योंकि सेल्स इंक्रीज करना है।
नो लेट्स से सेल्स मेरे को इंक्रीज करना है, बट अभी मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, लाइक हाउ शुड आई इन्वेस्ट दिस मनी. It may happen that if you invest 1 crore here, so your sales will get increased up to, like let's say 10 crores. तो अगर आप सोशल मीडिया में 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो सेल्स में आपको 10 करोड़ का फायदा होता है. अगर आप टीवी एड्स में यही काम करते हो तो अगर यहां पे आप 1 करोड़ पुट करते हो तो यहां पे आप सेल्स निकालोगे कि कितने की, कितना मेरे को सेल्स इंक्रीज होकर मिल रहा है इफ आई इन्वेस्ट 1 करोड़. बिकॉज देन ओनली, अभी देखो आप ये रेट ऑफ चेंज ही निकाल रहे हो कि अगर मैं सोशल मीडिया को 1 यूनिट से बढ़ाता हूं तो मेरा सेल्स किस यूनिट से बढ़ रहा है. अगर मैं टीवी एड्स को 1 यूनिट से बढ़ाता हूं तो मेरा सेल्स किस तरीके से बढ़ रहा है. तो मेरा, अगर मैं होर्डिंग्स को 1 करोड़ से बढ़ाता हूं तो मेरा सेल्स किस तरीके से बढ़ रहा है. ऑब्वियसली देयर विल बी अदर पॉइंट्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मार्केटिंग में, अब ऐसा होता तो फिर तो मैं 40 के 40 करोड़ सारा सोशल मीडिया में ही लगा दूं. लेट्स से दिस होर्डिंग इज आल्सो 6 करोड़. तो अगर मैं 1 करोड़ होर्डिंग्स में पुट करता हूं तो मेरे को 6 करोड़ का बेनिफिट होता है. तो अभी यहां से तो देखने पे मैं ऐसा लगता है कि फिर इसका मतलब तो 40 करोड़ आप पूरा सोशल मीडिया में घुसा दो. आप सोशल मीडिया को 40 करोड़ दोगे तो यहां से आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी सेल्स पे. बट सिर्फ यही फैक्टर कंसिडर नहीं करना है हमें. हाँ, हमें ये जरूर पता चल चुका है कि इस फैक्टर के अकॉर्डिंग मेरे को मैक्सिमम मनी सोशल मीडिया को देना है, उसके बाद टीवी एड्स को, उसके बाद होर्डिंग्स. दिस इज क्लियर फ्रॉम रेट ऑफ चेंज, राइट. बट हाँ, और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम सिर्फ मार्केटिंग करने गए हैं तो हमारा सिर्फ पर्पस यही नहीं है कि सेल्स ही बढ़ाएं. हमारा पर्पस कस्टमर्स की रीच भी है. वी वांट टू रीच टू द कस्टमर्स which haven't like come to us for years. जैसे कि बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, अलग अलग सेगमेंट्स हैं. फार्मर्स का एक अलग सेगमेंट है, सर्विस क्लास का एक अलग सेगमेंट है. तो हम उस अप्रोच से भी क्वेश्चन को, मतलब उस क्वेश्चन को उस तरीके से भी अप्रोच करेंगे कि हमें होर्डिंग्स पे भी पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि देयर आर सम प्लेसेस जहां पे आपको होर्डिंग्स ही लगाना पड़ेगा, जहां पे शायद सोशल मीडिया का उतना इंपैक्ट नहीं है, या जहां पे शायद टीवी एड्स का उतना इंपैक्ट नहीं है. तो वहां पे आपको होर्डिंग्स ही चलेगा आपका. या फिर लेट्स से आपका कोई ऐसा बहुत ही बिजी प्लेस है तो जहां पे आप बड़ा होर्डिंग लगाते हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे होर्डिंग्स का इंपैक्ट बहुत अच्छा है, तो वहां पे आप होर्डिंग्स लगाओगे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से ही हम ये डिसाइड कर लेंगे कि 40 करोड़ पूरा सोशल मीडिया को दे दो. बट यस, दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि कहां से ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है मेरी सेल्स पे. डेफिनेटली आई विल पुट द मोर मनी टू दैट सेक्शन, राइट. सो दिस इज द बेसिक, मतलब इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को अपना लगाते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स में और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, इकोनॉमिक्स में एंड लॉज. ये हमारे कुछ और भी सेक्टर्स होते हैं इनफैक्ट जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं. तो डिफेंस में, इनफैक्ट डिजाइनिंग में, जितने भी हमारे पास टैंक्स और जितने भी हम मशीन्स डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग में बहुत काम आता है ये सारी चीजें. तो मतलब बहुत ही वास्ट यूज है इन सब चीजों में. बट दैट इज अ सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम व्हिच आई शोड यू कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को यूज कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन स्टोर, कि ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला पार्ट हुआ. दिस इज व्हाई वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन. नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो भी हमने बोला, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. तो लेट्स से मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं. द फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू fx. ठीक है, अभी मैं वहीं से आगे बात शुरू करूंगा. ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, बात तो हमारी यहीं से ही शुरू होगी यार. द डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शन इज dy by dx y1 y dash और fx f dash x. इसके बाद अभी हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालेंगे. कैन आई रिमूव दिस? अगर किसी ने नहीं लिखा है तो जस्ट रेज योर हैंड. Okay. So this is known as first principle of differentiation. This method is known as first principle of differentiation. और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए we want to find out. So let's start with
by measuring the change in fx when we increase x to x plus delta h और x plus delta x, x plus h कर देते हैं चलो for simplicity. Just a minute. तो ये जो चीज हम बोल रहे हैं, ये हम क्या बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि देखो हमारे पास y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है, राइट? हमें इसका f डैश x निकालना चाहते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं। तो इसके डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम x की वैल्यू x से x प्लस h बढ़ा रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू x से x प्लस h बढ़ाएंगे तो हमारा y या हमारा fx कैसे चेंज होगा? तो पहली बात, पहले तो मैं आपको इसका एक बार ग्राफ दिखाता हूं। सॉरी, so this is the graph. This is some graph of y is equals to fx. मैं नहीं कह रहा कि यही हमेशा ग्राफ है, बस ऐसे ही। अगर लेट्स से ये हमारा ग्राफ हो, ये पॉइंट कोई x हो, तो इससे थोड़ा सा बढ़ाया हमने वैल्यू को, x प्लस h पे गई बस जस्ट, दिस इज x प्लस h, और हमने ये देखा कि ये कितना फर्क आया y में। तो पहले तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट होगा ग्राफ पे x, fx। क्यों होगा x, fx? x तो वैल्यू है ही, x की वैल्यू तो x है, और y की वैल्यू है fx के बराबर, राइट? तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट को आप fx लिख सकते हो। जब आप इस पे जाओगे तो आपका x कोऑर्डिनेट तो बन गया x प्लस h, राइट? और आपका y कोऑर्डिनेट बन गया fx नहीं, अब x की जगह आप रख चुके हो x प्लस h, तो आपका y कोऑर्डिनेट बन गया f ऑफ x प्लस h। So when you find out f dash x, what you are saying is that we want to find out this small change in x, small change in y with respect to small change in x. So small change in y with respect to small change in x. Now what is this small change in y? Y was first fx and second it was f of x plus h. तो इसके अंदर जो चेंज आया वो आया f of x plus h में से माइनस कर दूं अगर मैं f of x, इतना चेंज आया y के अंदर। एंड इफ आई फाइंड आउट द चेंज इन x, दिस विल बी x plus h minus x. Now we have written small change. How to define this as a small change? Put limit h tends to 0. If you say limit h tends to 0, it means that this change is very small. This is your first principle. That is how you find out the differentiation. In fact, this x got cancelled out with each other. This is just simply h. So change in x आपने बढ़ाया है x को h, तो y में चेंज आपको मिला f of x plus h minus fx. इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे। नाउ इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे 12th में पढ़ाना पड़ता है बार-बार, बट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। पता नहीं 12th में मैं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाएगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट मी, बट कोई भी जो भी पढ़ाएगा वो आपको ये बात वहां पे बता रहा होगा, बट आप ये बात यहीं से समझ के जा सकते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है भाई, आपने x को थोड़ा सा इंक्रीज करा, आप x को थोड़ा सा डिक्रीज भी तो कर सकते थे यार, तब भी तो थोड़ा सा ही चेंज होता ना। आप ये तो बोल रहे हो ना कि f डैश x निकालना है, तो f डैश x निकालने के लिए आपको x को थोड़ा सा बदल के देख लेना चाहिए कि x को अगर आप x से x प्लस h पे लेके जाओगे तो फंक्शन में कितना चेंज आ रहा होगा, यानी कि चेंज इन स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। तो आप इसी तरीके से फंक्शन को जैसे आपने इंक्रीज करा बाय h, यू कुड हैव डिक्रीज्ड इट बाय h।
तब भी तो सेम ही बात होगी। हाँ जी, बिल्कुल सेम बात होगी एकदम। इनफैक्ट आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, राइट? तो पहला पॉइंट तो हुआ हमारा यहाँ का ये, दिस वाज फर्स्ट पॉइंटर। अब सेकंड पॉइंटर लिखना स्टार्ट करो, अगर आप यहां तक लिख चुके हो तो। दिस इज ऑल्सो नोन एज, बाय द वे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों? आप जानते हैं x प्लस एच लगा हुआ है, x पॉजिटिव के लिए आपने निकाला है, f डैश ऑफ x पॉजिटिव। तो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे आपका राइट हैंड लिमिट था, वैसे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों होते हैं। अगर दोनों सेम है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। सो दिस इज नोन एज राइट हैंड डेरिवेटिव। सभी लोगों ने लिख लिया है? ओके, इन दैट केस सेकंड केस में आपको बिल्कुल सेम लाइन लिखना शुरू कर दो, बिल्कुल सेम। सेकंड पॉइंटर लगाओ, सेम लिखो सारा, और यहां पे बस डिक्रीज कर दो। x टू x माइनस एच। तो उस केस में जो हमारे पास पॉइंट होगा वो होगा भाई यहां, जिसमें हमारा पॉइंट, जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट x माइनस एच हो चुका हो। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x माइनस एच कॉमा f ऑफ x माइनस एच। फिर से वही f डैश x स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। इस बार जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आ जाएगी माइनस, और नीचे भी होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो चेंज इन y हो गया f ऑफ x माइनस एच में से माइनस करें अगर fx को, ऐसे ही चेंज इन y हो जाएगा x माइनस एच में से माइनस करें x को, तो नीचे बच जाएगा माइनस एच ना कि प्लस एच। और उसको हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एक हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव, एक हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इफ, और सॉरी यार गाइस, इसको x नेगेटिव करके लिख दो और उस पहले वाले में x पॉजिटिव लगा देना है अलग से। और अब हम इसको बताएंगे इफ LHD is equals to RHD at x, then There will be minus h in the denominator. yes, So, is it should be like possible this, na? Just listen to me. It should be like this, na? Correct? Yeah, and my x will be cancelled off. Yes. Sir, Yes. so like we keep the minus sign in the denominator, or like do we take it to the numerator? We can, but this is the general formula. This is how you can just remember it very quickly. I mean, we have done this because see, this only signifies the change in x and change in y. So उसी वजह से बस इतना किया कि f of x minus h minus fx upon minus h आ जाता है, वहां पे f of x plus h minus fx upon h आ जाता है। और अगर ऐसा होता है कि LHD और RHD दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम बोलते हैं f dash x is said to exist, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, और ये होगा जो भी इनकी वैल्यू आएगी बेसिकली। तो पूरा कॉन्सेप्ट तो ये है गाइस। अभी तुम लोगों ने क्या है, मतलब तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बस एक ही तरीके से सिखाया गया है, तुम्हें सारे फंक्शन ऐसे दिए गए हैं। एक्चुअली ये 12th में करना पड़ेगा तुम्हें। 12th में तुमसे पूछा जाएगा दैट दिस फंक्शन इज वेदर, टेल मी वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो तब आप दोनों चीजें निकालोगे, LHD निकालोगे, RHD निकालोगे, दिखाओगे दोनों सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। नहीं है सेम तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? बट अभी 11th क्लास में आपको सारे वो फंक्शन दिए जाएंगे जो डिफरेंशिएबल है, जो हमें पता है डिफरेंशिएबल है। हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो इस बार आपको LHD की जरूरत नहीं है, आप RHD वाला सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, यानी कि आपके लिए बस हमेशा पूरा टाइम फॉर्मूला यही चल रहा होगा, f of x plus h minus fx upon h, क्योंकि आपको ये नहीं चेक करना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है।
आपको तो हम बता रहे हैं, हम आपको ऑलरेडी फंक्शन सारे वही देंगे जो डिफरेंशिएबल है, आपको बस उसका डिफरेंशिएशन निकाल के रखना होगा। अब उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बार बार। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला इनटू डिफरेंट क्वेश्चंस ना। तब स्टार्ट करते हैं फिर। चलो फिर गाइस, क्लास इज ओवर फॉर टुडे। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. yeah.